Dear students, today we are going to discuss evolutionary species concept and mate recognition species concept. Outlines: we will cover the evolutionary species concept and the mate recognition species concept, focusing on their explanations and limitations for clear understanding. Lecture outcomes: by the end of this lecture, you will be able to define and understand both evolutionary and mate recognition species concept. You will learn how to apply these concepts in real biological situations and analyze the key differences between them. We will also evaluate their strengths and limitations and finally develop a clear comparative understanding for better exam preparation. Evolutionary species concept, a very powerful idea in modern taxonomy. This concept was formally proposed by Grant in 1971, although similar views were earlier suggested by McLeish and George Gaylord Simpson. According to this concept, a species is not just a group of similar organisms. Instead, it is an evolutionary lineage, a continuous sequence of populations connected through time. This means species are defined by their history, identity, and evolutionary fate, not just by their ability to reproduce. An important advantage of this concept is that it can be applied to aquatic populations, organisms that reproduce asexually, and even to fossils lineages where reproductive behavior cannot be observed. So, in simple words, a species is a line of evolution that maintains its identity through time while gradually changing. So, species is not just groups, they are stories of evolution unfolding through time. तो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट का जो एक फायदा हुआ वो ये हुआ कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट हम फॉसिल्स को अप्लाई नहीं कर सकते और ना एक्वाटिक पॉपुलेशन में जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन है उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते और ना हम म्यूजियम स्पेसिमेंस में हम उसको अप्लाई कर सकते क्योंकि दे आर नॉट लिविंग। और दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वहां पर मेटिंग का कोई तस्वुर नहीं है, तो इस वजह से वो वहां पे फेल हो रहा था। लेकिन इसका ये फायदा हुआ कि ये हम इवोल्यूशनरी लाइनेजेस फॉसिल में भी और इसी तरह हम एसेक्सुअल जो पॉपुलेशन है उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो की आइडिया इसका ये है कि स्पीशीज जो है एक इवोल्यूशनरी लाइनेज है, सीक्वेंस ऑफ एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट, लाइक एंसेस्टर एंड देयर डिसेंडेंट, और ये अपनी आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन रखती है थ्रू टाइम और इसकी अपनी इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज एंड हिस्टोरिकल फेट जो है वो प्रिजर्व रखती है थ्रू जियोलॉजिकल टाइम। Sampson's view regarding evolutionary species concept. According to George Gaylord Simpson, a species is an evolutionary lineage. That means a continuous ancestral descendant sequence of populations. This lineage evolves separately from other lineages and it has its own evolutionary role, trends, and future directions. In simple terms, a species is not just a group of organisms living together. It is a historical unit of evolution that maintains its identity over time. This concept emphasizes that each species has its own independent evolutionary fate, shaped by natural selection, adaptation, and environmental pressure. So remember, a species is a distinct evolutionary pathway, not just a collection of similar individuals. Each species tells its own evolutionary story through time. तो यहाँ पर अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें हॉर्स की इवोल्यूशन की, जो इवोल्यूशनरी लाइनेज है, तो यहाँ पर ये रेप्टाइल लाइक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, फिर उसमें इवोल्यूशन हुई है और उससे ये ऑर्गेनिज्म बन चुका है। फिर ये कॉन्ड्रिलार्था जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन अंगुलेट्स और जो डिजिटिग्रेट्स हैं उनके दरमियान, ये क्लॉड एनिमल थे, इनके क्लॉज थे बट दे वर जस्ट लाइक हॉर्सेस, और फिर उससे जो है हॉर्सेस जो है वो उनकी इवोल्यूशन हुई। तो ये अकॉर्डिंग टू सैमसन एक स्पीशी अपनी पूरी एक हिस्ट्री रखती है, अपनी यूनिटरी अलग से, और का रोल और उसकी टेंडेंसीज वो दूसरे लाइनेजेस से अलग इस तरह इवॉल्व हो रहा है और अपने हिस्टोरिकल
फेट और फ्यूचर दोनों वो रखते हैं। Evolutionary Species Concept according to Whaley. Whaley in 1978 described a species as a single evolutionary lineage, that is, a continuous ancestral descendant sequence of populations. According to him, this lineage maintain its own evolutionary tendencies and follow a distinct historical fate over time. In simple words, a species is not just a collection of organisms, it is a dynamic evolutionary unit with its own direction, identity, and destiny. This means each species evolved independently, shaped by natural selection, environmental pressure, and genetic changes. So remember this, a species is a continuous line of evolution with its own unique path through time. Every species carries its own evolutionary journey and future. Criticism. The main drawback is that this concept is actually describing a phyletic or phylogenetic lineage, meaning a continuous ancestral descending line through time. But remember, a lineage is not exactly the same as a species. So critics argue that this concept is not giving a precise definition of species, but rather explaining the history and relationship of organisms. In simple terms, it tells us how organisms are connected through evolution, but it does not clearly define what separates one species from another. So while it is useful for understanding evolution, it is not a complete species concept. It explains evolutionary history, but not the exact boundary of species. So it is not the actual definition of species. और ये सिर्फ आपको phyletic lineages या phylogenetic lineage या ancestral descendant relationship बताता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको स्पीशीज के एक्चुअल मीनिंग या स्पीशीज एक्चुअली है क्या और एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से किस तरह आइसोलेटेड है, हाउ दे आर आइसोलेटेड, ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता. दैट्स वाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनका एक बड़ा ड्रॉबैक है. Now let's talk about mate recognition species concept, which was proposed by Peterson and Lombard in 1987 as an alternative to the biological species concept. So according to this concept, a species is defined by a common fertilization system, which means individuals within a species share mechanisms that allow successful reproduction. To make it more simple, members of the same species are able to recognize each other as potential mates regardless of differences in appearances or behavior. So this concept focuses on pre-mating recognition system such as courtship displays or courtship signals, mating calls, chemical cues, or visual displays. So even if individuals look different, as long as they can identify each other as mates and reproduce successfully, they belong to the same species. To cut it short, a species is a group of organisms that share a common mating system. Species are defined not just by similarity but by their ability to recognize and choose each other as mates. तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो मॉर्फोलॉजी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट भी हो, लेकिन अगर वो एक दूसरे को एज मेट रिकॉग्नाइज करते हैं और मेट कर जाते हैं और सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन का मतलब होगा कि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्पीशीज है. लाइक इन दिस केस पीकॉक मेल और फीमेल दोनों बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है. एक लेमैन, एक कॉमन पर्सन अगर इनको देखेगा तो वो समझेगा कि ये दोनों डिफरेंट बर्ड्स हैं, लेकिन अगर आप उसको सही देखें तो दोनों है एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स, एक मेल है और एक फीमेल है. So this recognition can be of two types. First is active recognition, like here, involves courtship behaviors like visual displays, sounds, or chemical signals. Second is passive recognition, which occur at the cellular level, or you can say microscopic level, such as compatibility of gametes during fertilization. So whether this sperm will recognize the egg or the egg will recognize the sperm or not.
So, however, this concept has faced strong criticism. It has not received wide support among biologists. In fact, researchers like Walton in 1987 and Coney and colleagues in 1988 argue that this concept actually misinterprets Mayer's original biological species concept. So, although it highlights mating behavior, it is not considered a complete or widely accepted definition of species. So, this is the major criticism for this concept. तो ये जो मेटिंग होगी, जो मेट रिकॉग्निशन स्पीशीज कॉन्सेप्ट का बेस ही है, जो मेटिंग है एक एक्टिव रिकॉग्निशन होगी। जो एनिमल है वो एक दूसरे को विजुअली रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसमें कोर्टशिप बिहेवियर्स हैं, कोर्टशिप रिचुअल्स हैं, केमिकल एजेंट्स भी शामिल है उसमें, और कुछ बिहेवियरल डिस्प्लेस भी है। तो एक तो यहाँ पर विजुअल कोर्टशिप होगा, उसके बाद मेटिंग होगी। फिर पैसिव रिकॉग्निशन है, जो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जहां पर एग और स्पर्म ने मेट करना है। तो अब जो एग है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स है, आया वो स्पर्म को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी मेटिंग हो जाएगी। तो अगर वो हो गई तो फिर ये कंप्लीट हो गया और इसको हम फिर एक स्पीशी कंसिडर कर सकते हैं। Thank you for watching. I hope this lecture made evolutionary species concept and made recognition species concept clear and easy for you to understand. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe and share the video with your friends. Your support really helps the channel grow. If you have any question or need further clarification, feel free to ask in the comment section. I will see you in the next lecture. Keep learning and stay curious.